Pastor Shibu Abraham. Thank you so much, Pastor. Thank you. थैंक यू सो मच डियर पास्टर। आज के सुबह आपके फारूकाबाद सेक्शन के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे। रेवरेंड जॉर्ज मसीह के, उनके परिवार, उनके सारे सेक्शन के पास्टर्स के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए मिलकर हम लोग आराधना में जाएंगे। और इस समय मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आज हमारी नेटवर्क का भी थोड़ी समस्या है। आप चाहते हैं कि आप लोग सब अपने वीडियोज़ को अगर खोलें तो मिलकर एक साथ प्रभु की उपस्थिति में हम लोग आराधना में जाएंगे। आज के सुबह आराधना करने के लिए मेरा बेटा अलेक्सी आज शाम को अभी आएंगे और आराधना में हमें अगुवाई करेंगे। ओवर टू यू अलेक्सी। सारे आदरणीय पास्टर्स और विश्वासीगण को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और उसकी जय जयकार करेंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु
यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बहने दे ओ
उस हवा को छू ले, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को छू ले, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you for the most wonderful time. मिलकर हम प्रभु को धन्यवाद दें, ताली बजा के आज के सुबह हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु आज के सुबह हमारे मध्य में है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। प्रभु ने हमें साहस का आत्मा दिया। God has given us the spirit of strength, of faith and courage. हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कौन सा आत्मा दिया है? Courage का आत्मा। What does that mean all about? is to stand strong in the midst of trials. जीवन के कठिन परिस्थिति में एक साथ खड़े होना, और भीरुत्व की आत्मा नहीं, लेकिन साहस की, हिम्मत की और हौसला की आत्मा दिया है। हम जानते हैं हमारे पास 400 पास्टर्स हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कितने लोग के पास साहस है कि आके बैठे। लेकिन हाँ, कई बार साहस नहीं होती है, सबको अपनी अपनी ज़रूरतें भी होती है। कई बार एकता का, पास्टर जॉर्ज मसीह ने कहा कि एकता की आत्मा भी हमें चाहिए, ताकि हम एक मन होके प्रभु की उपस्थिति में आ पाएँ, हम प्रार्थना कर पाएँ। आइए मिलकर हम लोग सीधा वचन की ओर जाएंगे। और आज सुबह मैं बहुत ही सहभागी हूँ कि हमारे बीच में रेवरेंड जॉर्ज जोसेफ जो हमारे बीच में हैं। आप लोग सब उनसे जानते हैं। यू ऑल नो द मैन ऑफ गॉड। ही इज़ अ मैन हु स्टैंड्स फॉर द किंगडम ऑफ हेवन। वो परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े होते हैं और बहुत सारे लोगों के सामने में सेवा देते हैं। बट ही इज़ द कन्वीनियर ऑफ द मलयालम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और वो पीछे से कार्य करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग सब सामने आना चाहते हैं। वी ऑल वांट टू कम फॉरवर्ड, बट ही इज़ द सर्वेंट ऑफ गॉड हु स्टैंड्स फ्रॉम बैक एंड हेल्प्स द मिशन फील्ड्स थ्रू आउट इंडिया। इस भारतवर्ष के जितने मिशनरीज हैं, और उनके लिए वो पीछे से खड़ा होके मलयालम डिस्ट्रिक्ट को सहायता करते हैं। वी आर सो ग्लैड दिस मॉर्निंग टू हैव रेवरेंड जॉर्ज जोसेफ विथ अस।
and he's a man of faith, man of God, and he's the important and integral part of Malayalam District Council. And this morning he's going to come and share the word of God with us. और आइए मिलकर हम लोग सब लोग on behalf of Northern District Council of Assemblies of God and our prayer department and our Superintendent Reverend Shaji Varghese, I would like to invite. This is your time. You can come forward and share the word of God. This is your time. आइए मिलकर तालियों के साथ प्रभु के दास को हम स्वागत करें. Over to you, Pastor. Thank you, Shivu Abraham. I feel it's a great privilege for me to preach to the missionaries of NDC. और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं समझता हूं कि एनडीसी के पासबानों के बीच में आके प्रभु की सेवकाई कर पाऊं. I have been to some of the places in Uttar Pradesh like Nawabganj, Lucknow, Gola and all many years ago. और प्रभु के दास नवाबगंज, गोला और लखनऊ और तमाम प्रदेशों में कई साल पहले आके मिशन के कार्य में अपने हाथ को बटाए हैं. I love to preach to the missionaries than to the people in Kerala. और मैं मिशनरियों के बीच में प्रचार करना पसंद करता हूं, ना कि केरल के विश्वासियों के बीच में. എനിക്കൊരു യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആളാണ് ഇങ്ങനൊക്കെ നിങ്ങളോടുകൂടെ പ്രസംഗിക്കാൻ. എന്നാൽ കർത്താവ് ഒരു കൃപ തന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. मेरे पास कैसी कोई योग्यता नहीं है कि मैं प्रभु की खिदमत कर सकूं, लेकिन परमेश्वर ने दिया हुआ इस योग्यता के लिए मैं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് ശക്തമായി ഇടപെട്ട ഒരു ദൈവവചനം ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. आज सुबह मैं आपके सम्मुख में परमेश्वर का वचन को बांटना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है. Yes, Pastor. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം बता रहे थे सुसमाचार उसका इतना अध्याय 6-ാം അധ്യായം. ओके, मताई रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय की ओर आज की सुबह मैं आपसे कुछ बातों को कहना चाहूंगा. 25 മുതൽ 33 വരെ. उसका 6वां अध्याय उसका 25 से लेकर 33 तक आपके सामने मैं पढ़ूंगा. वाई का डे पास्टर. വായിച്ചു. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे. क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं. आकाश के पंछियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है. क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हो. तुम कौन है कि चिंता करके अपनी आयु में से घड़ी भरी बढ़ा सकता है. और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो. जंगली शोषणों पर ध्यान रखो, वे कैसे बढ़ते हैं. वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं. तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था. इसलिए जब परमेश्वर मैदान में घास को और आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो है अल्पविश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा. इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियों सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इस बात सब वस्तुओं की आवश्यकता है. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज उसकी धर्म की खोज करो और ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी. Praise the Lord. കാലാകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾക്കെല്ലാം പലവിധമായ ഭാരങ്ങളും വിഷമങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവും.
या ഒരു വേഷം കൂടെ പറയാമോ? കാലാകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ പലവിധമായ ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं और तकलीफें हो सकती है, ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും. और कई बार ऐसा हो सकता है कि हम प्रार्थना भी नहीं कर पाए, കാര്യം ഹൃദയത്തിനകത്ത് അതുപോലെ ദുഃഖവും വിചാരങ്ങളും എല്ലാം കയറിയിരിക്കുക. हमारे अंदर इतनी सारी दुख चिंताएं ഹൃദയത്തിനകത്ത് हमारे അതുപോലെ हृदय में ദുഃഖവും समा जाती വിചാരവും हैं, എല്ലാം കയറി. और बहुत सारी चिंताएं जो हमारे मनों के अंदर बैठ चुका है. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൃദയം പൊട്ടിപ്പോകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്. और कई बार मैं सोचता हूं कि मेरा हृदय टूट जाएगा. ദൈവവേലയിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളെയൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ ഒത്തിരി അഭിനന്ദിക്കുന്നു, അഭിമാനിക്കുന്നു. आप लोग जो परमेश्वर की सेवा यहाँ करते हैं, आप लोगों को मैं अभिवादन देना चाहता हूं जो आप खुदा के लिए खड़े हैं. നിശ്ചയമായും പ്രതിഫലം കർത്താവ് വീതിക്കുമ്പോൾ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന മിഷണറിമാർക്ക് അധികം ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. और मैं पूरी तरह विश्वास करता हूं कि उत्तर भारत के इन सेवकों के लिए परमेश्वर आप सबके लिए एक प्रतिफल रखा है जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे. ഈ വായിച്ച ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകമായി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആകാശത്തിലെ പറവുകളെ നോക്കുവീൻ, അവ വിതയ്ക്കുന്നില്ല, കൊയ്യുന്നില്ല, കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെക്കുന്നില്ല, എങ്കിലും ദൈവം അവയെ പുലർത്തുന്നു. यहाँ परमेश्वर का वचन में हमने देखा है कि आकाश के पंछियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है. ഞാൻ ഒരിക്കൽ പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സർ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഗോതമ്പിന്റെ കൊയ്ത്ത് നടക്കുമായിരുന്നു. मैं पंजाब में जब गया था तो मैं वहां के सेवकों को देखा हूं. വലിയ പിന്നെ ആ കണ്ടത്തിന്റെ നടുക്ക് വലിയ പടുത വിരിച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് കൊയ്ത്ത് മെഷീൻ കൊയ്ത്ത് കൂട്ടിയിട്ടേക്കുക. और मैंने देखा है कि पंजाब में जो मिशनरी लोग हैं वो पंजाब के जगह में बहुत सारे गेहूं को ऐसे बढ़ा के रखे हैं ताकि गेहूं की फसल को वो बाहर में बड़ा ढेर लगा के रखे हैं. അവരത് ചാക്കിനകത്താക്കി വലിയ ലോറിയെ കയറ്റി ഗോഡൌണിലോട്ടും മില്ലുകളിലോട്ടും ഒക്കെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. और वो है बोरियों में बंद कर कर उसको आग लगा के रखे हैं. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് വേണ്ടി കരുതുന്നതായി. मनुष्य है मनुष्यों के लिए रख रखाव करता है. അവിടെയുള്ള ഹരിയാന, പഞ്ചാബിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെന്നപ്പോൾ ബസ്മതി റൈസിന്റെ ഹാർവെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അന്നും ഇതുപോലെ അവിടെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. और जब मैं हरियाणा में गया वहां बासमती चावल की भी बुआई होती है, वहां भी लोगों ने इसी प्रकार से चावल को बोरी में रख के थाक लगा के रखा है. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നു, ആകാശത്തിലെ പറവകളെ നോക്കുകയും അവ വിതയ്ക്കുന്നില്ല, കൊയ്യുന്നില്ല, കളപ്പുഴയിൽ കൂട്ടിവെക്കുന്നുമില്ല, എങ്കിലും ദൈവം അവയെ പുലർത്തുന്നു. यहाँ परमेश्वर का वचन कहते आकाश के पंछियों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं और खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है. ഇന്ന് ഉള്ളതും നാളെ വാടിപ്പോകുന്നതും അടുപ്പിലിടുന്നതുമായ പുല്ലിനെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ചമയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്പവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെ എത്രയധികം ദൈവം ചമയിക്കും. परमेश्वर का वचन कहता है आज घास जो आज खिलता है और कल मुरझा जाती है, उसको अगर परमेश्वर ने इतनी खूबसूरत तरीके से संभाल के रखा है, अल्प विश्वासियों आपको परमेश्वर कितना देखभाल नहीं करेगा. അയാൾ എന്തുടുക്കും, എന്തു ഭക്ഷിക്കും എന്നോർത്ത് വിചാരപ്പെടരുത്. ദൈവം അവയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതും. जिसे तुम चिंता ना कहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, परमेश्वर आपके लिए सही समय में प्रबंध करता है. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നുള്ളത്
ഈ ദൈവവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സത്യമാണ്. ദൈവം ചെയ്യും. और इस बात के वचन के आधार पर हम देखें तो बिल्कुल सही बात है कि खुदा हमारे लिए हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है। But there is one condition. लेकिन परमेश्वर का एक कंडीशन है या एक मुद्दा है जो हमें पूरा करना है। മുൻപേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ, അതോടെ ഇതൊക്കെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകും. और शर्त यह है कि पहली बात है कि पहले उसकी राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। Praise the Lord. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്താൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കാര്യം ദൈവം ചെയ്തോളും. जब हम अपनी तरफ से जो काम हमें करना है हम अगर करते हैं तो खुदा अपनी तरफ से जो हमें हमारे लिए करना है खुदा हमारे लिए जरूर करेगा। പലപ്പോഴും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കും, നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കും. और कई बार परमेश्वर हमारी ओर ताकता है कि हम उस कार्य को करें जो खुदा हमसे करना चाहता है, लेकिन हम उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। Seek ye first the kingdom of God and all his righteousness and पहले all उसकी धर्म और राज्य की खोज करो। ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതും. अगर आप करते हैं तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए प्रबंध कर दिया जाएगा। എന്നാൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന അബദ്ധം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഭാരം കയറി ആകപ്പാടെ വിഷമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ താടിക്ക് കൈയും കൊടുത്ത് നമ്മൾ മൂലയ്ക്ക് മാറിയിരിക്കും. लेकिन हमारे साथ ये समस्या है कि हम सारी चिंताओं को अपने हृदय में रखकर अपने गाल में हाथ रख कर चिंताओं के साथ बैठ के प्रार्थना से दूर हो जाते हैं। വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇതിന് പറ്റിയ ഒരു ഉദാഹരണം ഏലിയാവ് എന്ന പ്രവാചകനും അന്നേരം അവിടെ നടന്ന ചില സംഭവങ്ങളുമാണ്. और बाइबल में इसका सबसे अच्छा उदाहरण एलिया जो नबी है, और बाइबल में उसके सामने जो घटित हुआ वो बातों को हम देख सकते हैं। ഏലിയാവിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു, ഗിലെയാദിലെ തിസ്ബിനിൽ നിന്നുള്ള തിസ്ബിനായ ഏലിയാവ്. और एलिया के बारे में हम कहते हैं इंदो पास्टर, ഗിലെയാദിലെ തിപ്സയിൽ നിന്നുള്ള തിപ്സനായ ഏലിയാവ്. और गली का जो एलिया के बारे में क्यों वॉइस अंगना- थोड़ा क्लियर नहीं है। അങ്ങനെ മാത്രമേ വേദോത്സവത്തിൽ ഏലിയാവിനെ കുറിച്ച് ആരംഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഗിലെയാദിലെ തിസ്ബയിൽ നിന്നുള്ള തിസ്ബനായ ഏലിയാവ്. और गलीलिया के जिस पे ना एलिया के बारे में यहाँ वर्णन कीजिए, बाइबल में सिर्फ ऐसे ही लिखा गया है। അതിനു മുമ്പുള്ള ചരിത്രമൊന്നും വേദോത്സവത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. और एलिया के जो पहले का इतिहास या उसके जीवन के पहली वाली बातें कहीं पे भी बाइबल में नहीं लिखी गई है। അദ്ദേഹത്തെ ദൈവം ആഹാബ് രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ ഈ ദേശത്ത് മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന്. और एलिया को जो है आहाब राजा के पास सामने ले गया और उसने कहा है जब तक मैं ना कहूं तो बारिश नहीं हो सकती है। ആഹാബും അവന്റെ ഭാര്യയുമായ ഇസ്മേലും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനത്തെ ബാൽ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ജനം മുഴുവൻ തെറ്റായ ആരാധനയിലായിപ്പോയി. और आहाब को जो है प्रेरणा करके वहां के मूर्तियों को आराधना करने के लिए मजबूर करने वाले लोग जो थे, इसके कारण जो है आहाब जो है वो गलत राहों में चले गया था। ദൈവത്തിന് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഏലിയാവ്. और उनको वापस परमेश्वर के पास लाने के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल किया गया एक नबी था एलिया। അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആഹാബിന്റെ അടുക്ക് ചെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ കെരീതോട്ടിന്റെ അടുക്ക് പോയിരുന്നു, അവിടുന്ന് തോട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചോണം, രാവിലെയും വൈകിട്ടും കാക്ക നിനക്ക് അപ്പവും ഇറച്ചിയും കൊണ്ടുതരും. और उसने कहा है, परमेश्वर ने कहा कि केरित जो है वो झरना के निकट में जाके बैठना और कौवे के द्वारा तुम्हारे खाने की प्रबंध कर दी जाएगी। മഴ പെയ്യാതിരുന്നോണ്ട് കെരീതോട് പറ്റിപ്പോയി. और क्योंकि बारिश नहीं हुआ इसलिए केरित का जो छोटा का जो पानी का स्रोत था वो सूख गया।
ക്ഷാമം, മഴ പെയ്യാതിരുന്നുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിൽ ക്ഷാമം കൂടി, അവിടുത്തെ കന്നുകാലികൾ മരിക്കാൻ തുടങ്ങി, മനുഷ്യർ മരിക്കാൻ തുടങ്ങി, അവരുടെ കൃഷിയെല്ലാം ഉണങ്ങി വരണ്ടുപോയി. और वहां सूखा पड़ गया, वहां पे सारे जीव जंतु जानवर और उनके कृषि, उनके फसल सब कुछ सूख गए और लोग भी मरने लगे। അങ്ങനെ ഏലിയാവിന് ഭക്ഷണം കിട്ടാതായപ്പം ഏലിയാവിന് വിശന്നു. और एलिया को जो है उसको भोजन नहीं मिला और बड़ा भूखा हो गया। ദേശത്ത് ക്ഷാമം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. और देश में जो है अकाल और भूखमरी से भर गया था। ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ഏലിയാവിന് വിശപ്പ് ആയി. और एलिया को जो है बिना खाने नसीब नहीं हुआ, इसलिए वो भूखा रह गया। ഈ സമയത്ത് ദൈവം ഏലിയാവിന്റെ അടുക്കെ പറഞ്ഞു, നീ സാരാഫ്യത്തിലെ ഒരു വിധവയെ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിന്നെ പോറ്റാൻ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. परमेश्वर ने एलिया से कहा कि साराफत में एक विधवा है जिसको मैंने रखा है, तुम वहां जाना, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध उनसे कराऊंगा। കെരീതോട്ടിരുന്നപ്പോ ഏലിയാവിന് നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെയാ കിട്ടി. और वहां जाके वो बहुत अच्छा खाना खाने लगा। ഒരുപക്ഷെ നല്ല ഭക്ഷണം വിധവയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കും ഏലിയാവിന്റെ യാത്ര. केरित के जो वो बैठा था, जब वो केरित में उसको बहुत अच्छा खाना मिलता था, लेकिन उसने सोचा परमेश्वर मुझे विधवा के पास भेज रहा है तो शायद मेरे लिए बहुत अच्छा खाना का प्रबंध कर दी जाएगी। ഒരിടത്ത് വഴി അടഞ്ഞാൽ ദൈവം വേറൊരിടത്ത് വഴി തുറക്കും. परमेश्वर जब एक जगह राहों को बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खुदा खुलता है। അവസാനം സാറാഫത്തിൽ ചെന്ന് വിധവയെ കണ്ടുപിടിച്ചു. और अब वो साराफत में जाकर उस विधवा को पहचान लिया, वो कहाँ रहती है। വിധവയുടെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. और विधवा के पास जाकर कहा कि मुझे एक गिलास पानी की आवश्यकता है। ആ വെള്ളം എടുക്കാൻ പോയ വിധവയുടെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരു അടയും കൂടെ കൊണ്ടു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. और जो पानी लेने के लिए जो विधवा गई थी उसको बोला कि मुझे एक रोटी भी लेकर आना। ആ ഭവനത്തിലെ യഥാർത്ഥ സിറ്റുവേഷൻ വിധവ ഏലിയാവിനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു. और वो विधवा जो उसकी घर की पूरी परिस्थिति को खुल के एलिया के सामने कह दी। നീ ഒരട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് എണ്ണേ ഉള്ളൂ, അത് പറഞ്ഞു. सिर्फ एक रोटी बनाने का जो आटा ही मेरे घर में है, इस बात की जानकारी विधवे ने एलिया को दिया। അത് കഴിച്ചു ഞാനും എന്റെ മോനൂടെ മരിക്കാനിരിക്കുക. और ये सिर्फ इस छोटा सा जो आटा है, इससे रोटी बना के खा के मैं और मेरा बेटा मरने के लिए तैयारी के और आगे बढ़ रहे थे, तब आप यहाँ आए। ഏലിയാവ് പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ, നീ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന അട എനിക്ക് കൊണ്ടു തരണം. और एलिया ने बोला ठीक है, बात सब सही है, लेकिन तू जो पहला रोटी बनाएगी उसे लेकर मेरे पास आना। അത് തന്നാൽ ഇസ്രായേലിൽ ക്ഷാമമുള്ളിടത്തോളം കാലം നിന്റെ കലത്തിലെ മാവും ഭരണിയിലെ എണ്ണ ഒരിക്കലും പറ്റിപ്പോകത്തില്ല. और उसने कहा कि अगर तुम मुझे दोगे तो इस्राएल में जब तक भूखमरी होगी, सूखा होगा, तो तुम्हारे घड़े के अंदर में जो खाना है, जो प्रबंध है, कभी भी खत्म नहीं होगी। ആദ്യത്തത് കണ്ടീഷൻ, രണ്ടാമത് ദൈവ പ്രവൃത്തി. पहला जो है परमेश्वर ने जो कंडीशन दिया, जो शर्त रखा, और दूसरा परमेश्वर ने अपने कार्य को किया। മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിപ്പീൻ, അതോടെ ഇതൊക്കെയും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करो और बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടല്ല വിധവ ഏലിയാവിന് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത്. विधवा जो उसके पास बहुत सारे खाने के प्रबंध था, इसलिए वो एलिया को नहीं दिया। അവളെ ഇല്ല കൊടുക്കാൻ, അത് തിന്നേച്ച് മരിക്കാനിരിക്കുക. അന്നേരം ആ സാധനമാണ് എടുത്ത് ഏലിയാവിന് കൊടുക്കുന്നത്. साराफत की विधवा अपने भोजन को खाकर, एक रोटी को खाकर मरने की तैयारी में था, तभी उस रोटी को निकाल कर वो एलिया को देता है। അതുകൊണ്ടാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ്, മുൻപേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിപ്പീൻ, അതോടെ ഇതൊക്കെയും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. इसलिए मत्ती से सुसमाचार 6 का
6 में लिखा है, इसलिए कि तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो और सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। ഇസ്രായേൽ ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്ന 3.5 വർഷക്കാലം വിധവയും അവളുടെ മോനും അവളുടെ വീട്ടുകാരും വിധവയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് അഹോവൃത്തി കഴിച്ചു കൂട്ടിയതായിട്ട് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. और बाइबल हमें सिखाता है कि इस्राएल के सूखा के समय में 3.5 साल तक उस विधवा के घर में वो भोजन की कोई कमी नहीं हुई और उस भोजन से वो खाकर तृप्त होकर वहां रहने लगी। 34 സങ്കീർത്തനം, ബാലസിംഹങ്ങൾ ഇരകിട്ടാതെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കും, യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കോ ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവ് വരത്തില്ല. और भजन संहिता 34 कहता है, अगर सिम और उनके बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो खुदा कोई बाट जोतते हैं वो कभी भी भूखे नहीं रह सकते हैं। നമുക്ക് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പറ്റുന്ന അബദ്ധം, ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം, എന്നാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മടിച്ചു നിൽക്കും. और हमारे और आपसे जीवन में जो कमी हमारे अंदर पाई जाती है, हमें परमेश्वर से सब कुछ चाहिए, लेकिन कई बार हम परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए हम पीछे हट जाते हैं। പല വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ഭാരങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറി അത് നമ്മളെ ഞെക്കി നമ്മളെ ആത്മീയമായി കീപ്പോട്ട് കൊണ്ട് അടിച്ചു കളയുന്ന ഒരു പ്രവണത ആത്മീയരുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. आपके और मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति घटित हो जाती है, सारी चिंताओं और भार को लेकर चिंतित होकर हम आत्मिक तौर से मुरझा जाते हैं और खुदा की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे विश्वास भी डगमगाया जाता है। സുവിശേഷ വേല ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഖത്തർ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് നിന്ന് എന്നെ ഡീപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. और परमेश्वर के दास कतर में प्रभु की खिदमत करते थे, इसलिए कतर की सरकार ने प्रभु के दास को वहां से उठा के भारत में फेंक दिया। ഒറ്റിക്കൊടുത്തു എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പുറകിൽ, സത്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. मुझे सच्चाई इस बात को अभी तक नहीं पता है कि किसी ने मुझे पकड़वा दिया या क्या कारण था कि कतर की सरकार ने मुझे भारत में भेज दिया। ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറി എന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായ ഭാരം മുഴുവൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു. और जब मैं वापस आया तो मेरे हृदय के अंदर बहुत सारी भार, बहुत चिंताएं थी। वो चिंताएं मेरे बच्चों के बारे में थी। ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവരുടെ ഭാവി, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള് എല്ലാം മിക്കവാറും കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് വല്ലാണ്ടായി പോകും. मैंने सोचा कतर से मैं वापस आ गया, अब उनकी पढ़ाई लिखाई और कैसे होगा, उनकी भविष्य क्या होगा, इन चिंताओं मुझे खाने लगी और मैं बड़ी निराश हो गया। അവർക്ക് വിവാഹം ആലോചിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചോദിച്ച് എന്റെ ഹൃദയത്തിനെ ഭാരപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. और मेरे हृदय के अंदर उनकी शादी या वैवाहिक जीवन के बारे में सोचकर मेरा हृदय जो है बहुत ही चिंतित और व्याकुल हो गया। ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. और कई दिनों जो है मैं बैठ के रोता रहा। അങ്ങനെ ചില രീതിയിൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഒരുപാട് ഭാരം വരികയും ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. और मेरे हृदय में इस प्रकार की चिंताएं आकर मैं बहुत ही चिंतित रहा और भयभीत हो गया। എന്നാൽ ആ കറക്റ്റ് സമയങ്ങൾ വന്നപ്പോഴത്തേനും ദൈവത്തിന്റെ കരം എനിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു. लेकिन जब समय आया तो खुदा का सामर्थी हाथ, आश्चर्य हाथ मेरे जीवन में अद्भुत कार्य को परमेश्वर ने किया। ആ വിവാഹ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഫാമിലീസ് ഒന്നും എന്നോട് നിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എന്തിനാ ഡീപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. और जो मेरे बच्चे की शादी की जो बातें आगे बढ़ रही थी, तो कभी भी किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि कतर से क्यों वापस आ गए हो। किसी ने कोई भी मेरा आना उसके शादी के लिए बाधित नहीं हुआ। ഞാൻ ഭാരപ്പെടുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്ത പോലുള്ള ഒരു കാര്യവും സംഭവിച്ചില്ല. मैंने जिस बात के लिए चिंता करता था, जिस पे आकर के लिए जिस बात के लिए व्याकुल था, ऐसी कोई बात वहां नहीं हुई।
അതുകൊണ്ട് ആ വാക്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ചു പറയുവാണ്. മുൻപേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിപ്പീൻ, അതോടുകൂടെ സകലവും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാതിരിക്കുമോ. इसलिए मैं एक और बार मैं अपने जीवन की गवाही को लेकर इस वचन को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं. पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी. അങ്ങനെ ഞാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മിഷൻസ് മലയാളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ളവർ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് പോകുന്നത്. और जब मैं ऐसे चिंतित था, तभी मुझे उत्तर भारत के मिशन ट्रिप के लिए मिशन डिपार्टमेंट मुझे लेकर उत्तर भारत में लेकर आया. ആ ട്രിപ്പിൽ ഏതാണ്ട് 13 സ്റ്റേറ്റുകൾ കവർ ചെയ്തു, കയറി ഇറങ്ങി. और उस ट्रिप में मैं करीब 13 राज्यों में इस मिशन के संघ में उनके साथ गया. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിങ്ങളുടെ സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഗോളായിൽ വരുവാനും അവിടെ നിന്ന് നവാബ്ഗഞ്ചിൽ വന്ന് അന്നത്തെ മിഷണറിമാർക്ക് വേണ്ടി 3 ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന എല്ലാം നടത്തുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു. और मुझे आपका हमारे सुप्रिंटेंडेंट रेवरेंड शाहजी वर्गीस के गोला का जगह में जाने का अवसर मिला. नवाबगंज में आके 3 दिन की उपवास प्रार्थना को भी संचालन करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया. ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പഞ്ചാബ്, ബീഹാർ, ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്ന് വേണ്ട ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള മിഷണറിമാരെ പരിചയപ്പെടാനും കാണുവാനും അവരുടെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കാനും എല്ലാം ദൈവം കൃപ ചെയ്തു. परमेश्वर मुझे उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, ये सारी प्रांतों में मिशनरियों के साथ रहकर उनके साथ सेवा करने का अवसर खुदा ने मुझे दिया. ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും മിഷണറിമാരുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചത്. मैं जब कहीं जाता था तो मिशनरियों के घर में वहां उनके साथ रहता था. അല്ലാതെ ഹോട്ടലിലൊന്നും പോയി താമസിച്ചിട്ടില്ല. मैं कभी भी कोई होटल में जाके नहीं ठहरा था. മിഷണറിമാരുടെ കൂടെ താമസിക്കാമെങ്കിൽ അവരുടെ ആ സാഹചര്യവും അന്തരീക്ഷവും ബുദ്ധിമുട്ടും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി സന്തോഷത്തോടെ അതൊക്കെ കാണാനും അവരനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതയിൽ ഭാഗവാക്കാക്കുവാനും എല്ലാം ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു. मैं मिशनरियों के साथ इसलिए रहता था ताकि उनके दुख तकलीफ, उनकी परेशानियों को मैं जीवन में अनुभव कर सकूं और किसी न किसी रीति से उनकी सहायता कर पाऊं, इसलिए मैं उनके साथ रहता था. ദൈവം എനിക്കൊരു കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു. സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായിട്ട് ദൈവം എനിക്കൊരു വാതിൽ തുറന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. परमेश्वर ने मुझे इस बात को दर्शाया कि सुसमाचार के लिए प्रभु मेरे लिए एक रास्ता खोल रहा. ഞാൻ ഒറീസയിൽ ഒരു മിഷണറി വീട്ടിൽ ചെന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ ആ മിഷണറി എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു. उड़ीसा में एक मिशनरी के घर में मैं जब रह रहा था तो मिशनरी ने मुझे एक बात को सिखाया. 19 വർഷമായി അന്ന് അദ്ദേഹം ഒറീസയിൽ മിഷണറി വേല ചെയ്യുന്നു. करीब 19 साल से वो उड़ीसा में मिशन की सेवकाई करता था. അദ്ദേഹം പ്രാരംഭത്തിൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുടിലിനകത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. जब वो सेवकाई के आरंभ में छोटे से झोपड़ी के अंदर अपनी सेवा को आरंभ किया. ആ കുടിലിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വലിയ മുരിക്കുമരമുണ്ട്. മുരിക്കുമരം. ओके, उसके बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था. അവിടെ ആ മരത്തിൽ ഒത്തിരി ചൊറിയാമ്പുഴു കയറിയിരിക്കും. और उस पेड़ में बहुत सारे ऐसे कीड़े थे जो शरीर में लगे तो खुजलाते हों. 12 മണിയായി ചൂട് കൂടുമ്പോഴത്തേനും ഈ ചൊറിയാമ്പുഴു എല്ലാം കൂടെ വലിയ മരത്തിൽ നിറങ്ങി ഈ മിഷണറിയുടെ വീട്ടിൽ അകത്തോട്ട് കയറി മിഷണറി കടിക്കും. और जब 12 बजे धूप बढ़ जाती है, सारे कीड़े जो खुजलाते हैं मिशनरी के घर में पेड़ से उतर के आते हैं और मिशनरी को काटते हैं. അദ്ദേഹം പല ദിവസം ഇത് സഹിച്ചു. അവസാനം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്ന ഓർഗനൈസേഷന്റെ സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ചു. और बहुत बार वो सहने के बाद उनको जो सेवकाई के लिए वहां लाया है वो सेक्रेटरी साहब को उन्होंने फोन किया. സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ല, ഹൈദരാബാദിലാ, തിരിച്ചു വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. और सेक्रेटरी साहब ने बोला, मैं तो अभी हैदराबाद में हूं, मैं वापस आऊंगा तो मैं देखता हूं आपके लिए कुछ करूंगा. ഈ മിഷണറി അവസാനം ഈ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചെന്ന് കുറച്ച് തീ ഇട്ടു. ആ ചൊറിയാമ്പുഴു ഒന്നും നശിച്ചില്ല, അതെല്ലാം മേപ്പോട്ടം കയറിപ്പോയി. और वो मिशनरी क्या किया, वहां आग लगाया और आग लगाने के बावजूद ये कीड़े मरे नहीं. वो कीड़े जो है पेड़ के ऊपर वापस चढ़ गए. അവസാനം സഹിക്ക വയ്യാതെ ഒരു ദിവസം ഒത്തിരി കരഞ്ഞു കിടന്നുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. और एक बार वो
इस बात को, इस परिस्थिति को देखकर सह न सका और रो कर प्रार्थना करने लगा। പിറ്റേ ദിവസം 12 മണിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് മൈന പോലെ തിരിക്കുന്ന 2000 കിളികൾ വന്ന് ഈ മരത്തേലോട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്ത് അതേലിരുന്ന ചൊറിയാമ്പുഴുവിനെ മുഴുവൻ കുത്തി തിന്നു കളഞ്ഞു. प्रेज गॉड। अगला दिन ये हुआ कि वहां से करीब 2000 चिड़िए उस वृक्ष के ऊपर आए और जितने भी खुजलाने वाले कीड़े को एक एक कर कर ये जो ये जो आए थे वो सब एक एक कर कर वो चिड़िए खाने लगे। ആ മിഷണറി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു, 19 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു, പിന്നീട് ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ പക്ഷികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. वो मिशनरी ने मुझे इस प्रकार से कहा, 19 साल से मैं यहाँ रह रहा था और उसके बाद से कभी भी मैंने उन कीड़ों को उस वृक्ष में नहीं पाया और मुझे आज तक आके इन कीड़ों ने नहीं काटा। ബാലസിംഹങ്ങൾ ഇരകിട്ടാതെ വിശന്നിരിക്കും, യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവ് വരുത്തില്ല. अरे सिम के बच्चे भूखे रह सकते हैं, जो खुदा की बाट जोते हैं वो कभी भी भूखे नहीं रह सकते हैं। ഞാൻ കുറെ കഷ്ടതയിലും പ്രയാസത്തിലും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോയെങ്കിലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മിനിസ്ട്രി എന്റെ കൈ തന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. मैं बहुत सारे दुख, परेशानी और क्लेशों से होकर गुजरा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने मुझे एक ऐसा सेवा दिया है कि मैं दूसरों की मदद कर पाऊं। ഒരു സൈഡിൽ അതിൻ്റെതായ കഷ്ടവും ദുഃഖവും വേദനയും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ മിനിസ്ട്രിക്കകത്തെ സന്തോഷമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം എന്റെ പ്രയാസ സമയത്തും കഷ്ടസമയത്തും എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത്. मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं, एक सच्चाई को कहना चाहता हूं, मेरे जीवन में क्लेश, कष्ट और दुख तो जरूर है, लेकिन जब मैं परमेश्वर की खिदमत करता हूं तो जिस उससे सेवकाई से जो आनंद को पाता हूं वो आनंद ही जो आज तक मुझे खड़ा किया है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर पाऊं। അവരൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള മിഷണറിമാരെ ഞാൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. और उत्तर भारत में जो मिशनरी लोग, आप जैसे प्रभु के दास लोग को मैं आज की सुबह आप लोगों को सैल्यूट देना चाहता हूं। ഞാൻ ശരീരം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും എന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലാണ്. मैं यहाँ शारीरिक रूप से बैठा हूं, लेकिन मेरा दिल और आत्मा आप लोग के साथ उत्तर भारत में आज भी है। അധികം താമസിയാതെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാം വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. और बिना समय गवाए बहुत जल्दी आप लोग के बीच में आकर उत्तर भारत में आप लोग से मैं मिलना चाहता हूं। मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പല ദൈവദാസന്മാരും ജയിലിലും കഷ്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എനിക്കറിയാം. उत्तर भारत में बहुत सारे सेवक लोग आज जेल में और बहुत कठिनाई के साथ अपनी जीवन को बिता रहे हैं, ये मैं जानता हूं। രാജസ്ഥാനിലും വലിയ പ്രയാസത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ മിഷണറിമാർ കടന്നു പോകുന്നു. और राजस्थान में भी बहुत दुख और कठिनाई के साथ मिशनरी लोग आज अपनी सेवा कर रहे हैं। എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിലും മിക്ക ദിവസം ഉത്തർപ്രദേശിലെയും അവിടുത്തെ മിഷണറിമാരെയും എനിക്കറിയാവുന്ന പേരുകളൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. और उत्तर प्रदेश में भी जो मिशनरी लोग इस संघर्ष से जा रहे हैं, मुझे जितना भी नाम उपलब्ध होता है उनके नाम लेकर हर दिन प्रार्थना करता हूं। എനിക്ക് നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായെങ്കിലും ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു മിനിസ്ട്രി എന്റെ കൈ തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിക്കുന്നു. और मेरे जीवन में बहुत सारे तकलीफों का सामना किया, बहुत सारे नष्ट मेरे जीवन में हुआ, लेकिन खुदा ने मुझे एक ऐसा सेवा दिया, इसलिए मैं बहुत ही खुदा के प्रति धन्यवादी हूँ। കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പൗലോസിനുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിത് നഷ്ടമായത് മുഴുവൻ ദൈവം ലാഭമായി എനിക്ക് തിരികെ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ ദൈവം എന്നെ അത്ഭുതകരമായി അതിശയകരമായി നടത്തിയ ദൈവകൃപയ്ക്കാൻ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. और पौलुस की तरह मैं भी कह सकता हूँ, जो बातें मेरी हानि के लिए थी पर खुदा ने मुझे वो लाभ के लिए बना दिया। ये भी मेरे पौलुस के साथ इस गवाही को मैं आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ। सारी बातें मेरे लिए कुल मिला के लाभ के लिए उत्पन्न हो रही है। ഇന്ത്യയിലെ പല സ്റ്റേറ്റിലും മിഷണറിമാർക്ക് സ്ഥലം മേടിക്കാനും
അവർക്ക് സഭ പണിയാനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവം എന്റെ കരത്തെ ബലപ്പെടുത്തി. और उत्तर भारत में बहुत सारे पासबानों के लिए जमीन खरीदना और कलीसिया को निर्माण करने के लिए प्रभु जी ने मुझे इस्तेमाल किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा। എന്റെ കഴിവുകൊണ്ടൊന്നുമില്ല, ദൈവം സഹായിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. ये मेरी काबिलियत नहीं है, बस इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, ये खुदा ने मुझे सहायता किया, इसलिए मैं आपकी सेवा कर पाया। മുൻപേ അവന്റെ രാജ്യവും അന്വേഷിപ്പീൻ, അതോടുകൂടി ഇതൊക്കെയും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. पहले खुदा की राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें उपलब्ध की जाएगी। ആകാശത്തിലെ പറവകളെ നോക്കുവിൻ, അവ വിതയ്ക്കുന്നില്ല, കൊയ്യുന്നില്ല, കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെക്കുന്നില്ല, എങ്കിലും ദൈവം അവയെ പുലർത്തുന്നു. आकाश की पंछियों को देखो, वो ना बटोरते हैं, ना बोते हैं, ना काटते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके लिए प्रबंध करता है। നമ്മുടെ ഭാവി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഭാരം വന്നാലും ഓർത്തോണം, ഈ നല്ല കർത്താവ് നമ്മളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്ന ശക്തനായ ദൈവമാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. एक बात को याद रखें, हमारे जीवन में इस दुख और कठिनाई और परेशानी को जब हम सामना करते हैं, याद रखें हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। हमारी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए वो वफादार है, वो योग्य है, वो विश्वास योग्य है। ഇന്ന് ഉള്ളതും നാളെ അടുപ്പിലിടുന്നതുമായ പുല്ലിനെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ചമയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്പവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെ എത്രയധികമായിട്ട് ദൈവം ചമയിക്കും. परमेश्वर का वचन कहता है, आज घास जो आज खिलती है कल मुरझा जाती है, अगर उसको परमेश्वर इतना संभालता है, उसकी शोभा बढ़ाता है अल्पविश्वासियों, खुदा आपके लिए क्यों ना प्रबंध करेगा। ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്, ഭാരപ്പെടരുത്, എല്ലാം പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക അത്രേ വേണ്ടത്. എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കാക്കും. परमेश्वर का वचन जो है फिलिपियंस की पुस्तक में इस प्रकार से कहा है कि तुम किसी भी बात की चिंता ना करना, हर एक बात में परमेश्वर के सम्मुख में तुम उसको रखना, और परमेश्वर जो कृपालु है, दयालु है, सर्व सामर्थी है, अनुग्रह से भरा है, वो आपकी हर एक जरूरतों को समय में पूरा करेगा और आपको संभालेगा। ജയ് മസീഹി. ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। थैंक यू डियर पास्टर फॉर कमिंग एंड आकर आपने छोटे से समय में प्रभु के दास को कहीं जाना है, एंड ही हैड टोल्ड मी दैट आई वांट टू हैव सम अपॉइंटमेंट, सो ही वांट टू गो फ्रॉम हियर। आइए मिलकर हाथ उठा के हम प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करें। वी आर गोइंग टू प्रे फॉर द सर्वेंट ऑफ गॉड। All of you lift up your hands and raise your hands for the man of God who went through many troubles in his life. And मैं आपको बताना चाहता हूँ, करीब 3 साल पहले എത്ര വർഷമായി പാസ്റ്റർ അമ്മാമ മരിച്ചിട്ട്? 3 വർഷം. ओके, करीब 3 साल पहले उनके प्रभु का दिया हुआ उनकी पत्नी भी प्रभु में सो गई। लेकिन देखिए, इतने तकलीफों के बाद भी वह आप उत्तर भारत के लिए वो सेवा करने के लिए आते हैं। मेरे प्रियो, हम मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उनको और इस्तेमाल करे उत्तर भारत के लिए। लेट्स ऑल लिफ्ट आवर हैंड्स टुगेदर एंड रेज इट अप टू हिम। और हमारे बीच में पास्टर रजिश शामिल है, वो प्रार्थना करेंगे प्रभु के दास के लिए और आज के वचन के लिए। और may God bless him, use him, give him good health, so that he may used for mightily for the people, and his heart that have a burden for North India, वो भार को अपने जीवन से वो दे सके। आइए मिलकर हम लोग रजिश श्यामल के साथ प्रार्थना करेंगे। पास्टर रजिश श्यामल प्रार्थना करें प्रभु के दास के लिए, आज के वचन के लिए, और आशीष वचन के साथ समाप्त करें।
ओके, अभी कर सकते हैं पास्टर जी, आप कर सकते हैं, अभी अनम्यूट कर सकते हालेलुया। हमारे सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावंद, आज तेरे दास के द्वारा हमें जॉर्ज जोसेफ प्रभु के दास के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर हमसे बातें किया प्यारे खुदावंद। तेरे दास को तो इस्तेमाल कर प्यारे पिता परमेश्वर। हमें आज हमने सुना वचन के आधार पर प्रभु हमारे जीवन में हर एक कठिनाई में हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, हमारे मांगने से ज्यादा, सोचने से ज्यादा हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर आप ही है प्रभु जी। पहले आपके राज्य, आपकी धार्मिकता की खोज करने के लिए हमें सहायता कर परमेश्वर। तेरे दास को तूने इस्तेमाल किया प्यारे पिता, तेरे अभिषेक तेरे दास को और दीजिए प्रभु। हमें इस उत्तर भारत के लिए आपने दिया भोज के लिए धन्यवाद, दर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेष अभिषेक तेरे दास को दीजिए, हमें उनके बच्चों को आशीषित कर प्यारे खुदावंद। जगह कहीं भी तेरा दास पैर रखेंगे, हमें प्रभु तेरे दास के द्वारा हमें बड़े बड़े अद्भुत काम होने पाए प्रभु जी। हमें जगह जगह सेवा के लिए निकलते हैं प्रभु, हमें तेरा प्रोटेक्शन होने पाए प्यारे पिता। उनके सफर में साथ रहे, उनके मिनिस्ट्री में साथ रहे प्यारे खुदावंद। तूने दिया दर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं और इस्तेमाल कर प्यारे खुदावंद। आत्मा के अभिषेक में आप उन्हें इस्तेमाल कर प्यारे खुदावंद। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें प्रभु तूने हमें संभाला, सहायता, मदद किया प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते जितने दास लोग आज वचन को सुना, हमें उनके सारे कष्ट में, निराशा में, दुख में, संकट में प्रभु तू उनकी हिम्मत मानकर हमें उनको तसली दीजिए प्रभु। हमें उनका सांत्वना दीजिए, उनके सारी समस्या का समाधान होने पाए प्रभु, क्योंकि आप हमारे लिए हमें समय पे उपाय करने वाला परमेश्वर है। आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो बोते ना काटते हैं, हमें ना कत्ते में जमा करते हैं, हमें उससे परमेश्वर जरूरत आप पूरा करता है। हमें कौवे के बच्चों को भी आहार देने वाला परमेश्वर। जंगल के शेर भूखे रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के धर्मियों को किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगा, तूने वायदा किया प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावंद। अपने दास को तू और भी इस्तेमाल कर प्रभु जी। इस उत्तर भारत के लिए एक बोझ के साथ हमें बहुत से दासों को हमें प्रभु जी हमें वचन के द्वारा उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें प्रभु सहायता मदद कर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावंद। हम सारे दासों के लिए, दासियों के लिए धन्यवाद, पास्टर्स के लिए, परिवार के लिए धन्यवाद, उनके बच्चों के लिए धन्यवाद, उनके कलीसिया के लिए धन्यवाद, उनके सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे भी सहायता मदद कर, आपके दर्शन के साथ हमें सेवा, हमें जीवन के अंत तक विश्वास योग्यता से करने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें सहायता मदद करे। सारी आदर महिमा हमें स्तुति प्रशंसा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आशीष वचन भी। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे एक दासों के साथ, हर एक पवित्र लोगों के साथ यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन।